Welcome to all of my students. Now we are discussing linear programming, which is the syllabus of ISC class 12 section C, exercise number 3.1 of ML Aggarwal. Here is the question number 1. Two tailors A and B earn rupees 300 and rupees 400 per day, respectively. A earns rupees 300 per day, B earns rupees 400 per day. Okay. A can stitch 6 shirts and 4 pairs of trousers, while B can stitch 10 shirts and 4 pairs of trousers per day. So here is given the efficiency of A and B separately. Okay. To find how many days should each of them work, and if it is desired to produce at least 60 shirts and 32 pairs of trousers at a minimum labor. At a minimum labor, sixty shirts, 32 pairs of trousers at a minimum labor cost. Formulate this as an LPP. Okay? তাহলে কি বলছে না, টু ফাইন্ড হাউ মেনি ডেজ শুড ইচ অফ দেম ওয়ার্ক, তারা কতদিন একসঙ্গে কাজ করবে যদি if it is desired to produce at least 60 shirts and 32 pairs of trousers. তাহলে তারা কতদিন কাজ করলে আমার production of shirts will be 60 and our production of trousers will be 32 pairs. Okay. And also at a minimum labor cost. तो इसको जो प्रॉब्लम बोला इसको हमको क्या करना चाहिए, फॉर्मूलेट करना चाहिए, फॉर्मूला में पुट करना चाहिए. ठीक है. तो कैसे होगा, लेट A's working days is X. X दिन, A's continuation is X days and B's continuation is Y days. Okay. We know that the A earn rupees 300 per day. So A in X days, A's earning will be 300 into X, that means 300X. B's earning will be पर डे का उसका अर्निंग क्या है, बी का 400, और वाई दिन काम किया, यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर वाई होगा, बी काम किया कितना दिन, वाई दिन, इसीलिए होगा 400 वाई. ओके, 400 वाई, 400 वाई, तो दोनों का इतना रोजगार है. ठीक है. The mathematical formation of LPP is mathematical formation of LPP is what will be the total minimum earnings of both. Total minimum earnings of both দুজনের একসঙ্গে মিনিমাম আর্নিং কি হবে না, এর আর্নিং एक्स डेज के लिए और बी इज अर्निंग वाई डेज के लिए, तो 300x प्लस 400y. क्लियर. তাহলে মিনিমাইজ জেড ইকুয়াল টু क्या होगा, 300x प्लस 400y. ঠিক আছে, ঠিক আছে. অ্যান্ড কি বলছে না, টোটাল মিনিমাম আর্নিংস অফ বোথ this and that is the subject to the constraint. অর্থাৎ আমার এখানে যা বিষয়বস্তু বলেছে, here is given that all things according to the problem we can write the minimum earning z equal to 300x plus 400y. Clear.
Therefore, in x days and y days, the total starts of A and B respectively is 6x and 10y, because A can produce 6 shots per day and A works for 6 days, and that's why the production of A will be 6 into x. And similarly, the production of y equal to will be 10 into y, because the number of working days of y is y, number of working days of B equal to y, and its rate of doing work is 10 per day, and that's why in y days the total production by B equal to 10 into y. ए इसका टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या बोला साम्स में, बोला जे इफ इट इज डिजायर्ड टू प्रोड्यूस एटलिस्ट 60 शर्ट्स एंड 32 पेयर्स ऑफ ट्राउजार्स, ঠিক আছে, যদি তারা 60 শার্ট এন্ড 32 ট্রাউজার যদি করে তৈরি করে, তখন আমি এখানে লিখতে পারি উই ক্যান রাইট দ্যাট their production must be greater than 60 or equal to 60. Because question into the question to find how many days should each of them work, and if it is desired to produce at least 60 shirts and 32 pairs of trousers. Okay, that means 60 trousers. Clear hello? That means 60x, 6x plus 10y. This is the total production, and that will be the equal will be 60 or greater than 60. Current it is desired to produce at least 60 करना ही है, 60 शर्ट एंड 32 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ये करना ही है। इसीलिए दोनों का प्रोडक्शन इक्वल टू 60 होगा, ठीक है। तो क्या होगा ना, ए का प्रोडक्शन क्या है, ए कितना शर्ट काटता है, एक 6 शर्ट बनाता है, तो 6 इंटू एक्स होगा। और बी कितना शर्ट बनाता है पर डे, 10 शर्ट बनाता है, तो बी का प्रोडक्शन क्या होगा 10y, दैट मीन्स 6x प्लस 10y ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। बस इसको सॉल्व करने से मिलेगा, जैसे से सॉल्व किया देखो, खूब सिंपल सॉल्व है, ठीक है। बस हो गया 3x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। क्लियर? एंड दिस इज द इक्वेशन। Okay, about shirt. Considering shirt. Now we have to consider trousers. In X days and Y days, the total trousers of A and B कितना होगा, कितना होगा, देखो क्या होगा ना, A कितना प्रोडक्शन करता है पर डे में 4 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, और B कितना करता है 4 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, दोनों का सेम होता है। तो इसलिए एक दिन में इन एक्स डेज द प्रोडक्शन ऑफ ट्राउजर्स बाय ए इक्वल टू 4 इंटू एक्स, क्योंकि ना हर दिन में 4 बनाता है तो एक दिन में 4x होगा। एंड द प्रोडक्शन ऑफ बी विल बी द 4 इंटू वाई, बिकॉज इट्स हिज रेट ऑफ डूइंग इज 4 एंड ड्यूरिंग द वाई डेज, दैट मीन्स 4 इंटू वाई। At least 32 trousers must be produced. That's why 4x plus 4y greater than or equal to 32. 32 को ज़्यादा भी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा भी होना हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 32, एटलीस्ट 60 पहले जो था, तो ट्राउजर से इक्वेशन मिल गया, चले हमारा इक्वेशन मिल गया क्या, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर?
ठीक है, इसीलिए दोनों को लिखना है। एटलीस्ट 32 टॉर्चेस आर प्रोड्यूस बाई ए एंड बी। यहाँ पर भी लिख दिया एटलीस्ट 60 शार्ट्स आर प्रोड्यूस बाई ए एंड बी। शार्ट के लिए তাহলে শার্টস से शार्ट्स considering शार्ट्स we get one equation 3x plus 5y greater than or equal to 30, and considering trousers x plus y is greater than or equal to 8. Here x means क्या है, number of days, y means number of days. Days never be zero, and that's why x always greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Hence the problem can be formulated as LPP as minimize z equal to 300x plus 400y subject to the constraints, and also second equation means 3x plus 5y greater than or equal to 30, x plus y greater than or equal to 8, whereas x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. This is the answer. And all equations are the answer of this question, because you have to find out या हमारा क्वेश्चन क्या था, पूरा इक्वेशन बनाना है. प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय एलपी पे भी प्रॉब्लम्स कैन बी फॉर्मुलेटेड. जो टोटल जो हमारा प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन को पूरा फॉर्मूला में तैयार करना है, फॉर्मूला में पुट करना है. हम कैसे कैसे पुट करेगा, क्यों ना हमारा मिनिमाइज करना है. मिनिमम जो हमारा क्या है, उसका जो इनकम होता है, उसको एक फॉर्मूला बनाना होगा. और ट्राउज़र का और शॉर्ट्स का कंडीशन में एक फॉर्मूला बनाना होगा. और जो दिन है, जो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, उसको भी इंडिविजुअल फॉर्मूला बनाना है. इंडिविजुअल क्या है, एक्स तो नंबर ऑफ डेज है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो का बड़ा होगा व जीरो इक्वल भी हो सकता है. कभी ना ये तो काम नहीं किया तो जीरो हो सकता है. ठीक है, इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, जीरो भी काम बंद है तो बस वाई जीरो हो जाएगा, एक्स भी जीरो हो जाएगा. लेकिन माइनस तो नहीं होगा, दिन कभी माइनस होता है, डेज कभी माइनस नहीं होता. इसलिए ये चारों इक्वेशन लिखना है. और यहाँ पर मिनिमाइज उनको एलपीपी, ठीक है, लोअर प्राइस बोला ना, इसलिए जेड इक्वल टू 300x प्लस 400y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, इसे लिखना है. समझ गया ना? ठीक है, थैंक यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Small farm manufacturers necklaces and bracelets. Small farm manufacturers necklaces and bracelets. क्या क्या प्रोडक्शन हुआ है, नेकलेस एंड ब्रेसलेट. द टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स दैट इट कैन हैंडल पर डे इज एटमोस्ट 24. handle almost 24. It takes 1 hour to make a bracelet and half an hour to make a necklace. ठीक है, चलो ये जो पहले 4 लाइन से क्या क्या मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, मैन्युफैक्चर क्या बनाता है, नेकलेस एंड ब्रेसलेट बनाता है. टोटल नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स दैट इट कैन बी हैंडल्ड पर डे, अर्थात एक दिन का अंदर नेकलेस और ब्रेसलेट जो बनाता है एट ऑलमोस्ट 24 बनाता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा 24 होता है, 24 का कम भी हो सकता है. एटमोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा और एटलीस्ट मीन्स सबसे कम. at most 24. It takes 1 hour to make a bracelet. ब्रेसलेट बनाने के लिए एक एक ब्रेसलेट बनाने के लिए टाइम लग रहा है 1 hour. एंड नेकलेस बनाने के लिए
एक एक नेकलेस बनाने के लिए लगता है हाफ एन आवर, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे इज 16। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे इज 16, अर्थात वर्कर जो काम करता है पर डे 16 आवर्स काम करता है। इफ द प्रॉफिट ऑन ए नेकलेस इज ₹100, नेकलेस से प्रॉफिट होता है 100 रुपीज़, एंड दैट ऑन ए ब्रेसलेट इज ₹300, ब्रेसलेट बेचने से 300 मिलता है प्रॉफिट। फॉर्मुलेट द LPP, ये जो प्रॉब्लम है, फॉर फाइंडिंग हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड डेली, अर्थात पर डे कितना ब्रेसलेट कितना नेकलेस बनाएगा वो तुमको दिखाना है, एवं वही दोनों चीज़ दे के एक फार्मूला बनाना है, ठीक है, जो कि ना क्या बोला ना, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अर्थात प्रॉफिट होगा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। वही मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन बनाओ, एंड इट बीन गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ इच मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। প্রত্যেকটা জিনিসের কিছু না কিছু তৈরি হচ্ছে, কোনোটাই জিরো হবে না, ঠিক है, একটা অন্তত তৈরি হবেই হবে, ठीक है। चल যাই হোক, তাহলে हम लोग को क्या मालूम नहीं है यहाँ पर, हम लोग को मालूम नहीं है क्या ना पर डे कितना नेकलेस बन होता है, ठीक है। वी डोंट नो द हाउ मेनी नेकलेस विल बी प्रोड्यूस पर डे and how many bracelet will be produced per day, and that's why we have to assume that maximum number of necklace produced per day is X and the maximum number of bracelet produced by per day by Y. Why maximum? The maximum because at most 24, ये तो at most maximum क्या बोला ना, इट कैन हैंडल पर डे एट मोस्ट 24, अर्थात हमारा जो प्रोडक्शन होगा दोनों मिला के एटमोस्ट 24 चीज़ होगा ही होगा, 24 चीज़ होना चाहिए। 24 का अंदर नेकलेस भी होता है एंड ब्रेसलेट भी होता है, लेकिन कोई चीज़ जीरो नहीं होगा। इसीलिए लास्ट लाइन में क्या बोला, इट बीइंग गिवन दैट एटलिस्ट वन ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, अर्थात এটাকে ধরে নিতে হবে যে মিনিমাম একটা জিনিস আমাদের প্রত্যেকটা আইটেমের মানে দুটো আইটেমের মধ্যে একটা আইটেম তৈরি হবেই হবে। বাকি 23 একটা যদি আমার ব্রেসলেট হয়, ইয়ার ইউ লেট the number of bracelet is per day is 1, then how many necklace will be produced in one day? 23, because our total production at most 24, তার মানে 1 plus 23 means 24, clear? So now we have to assume the necklace production per day is X, and the necklace production and the bracelet production per day is Y, ठीक है। The profit from necklace, because here is given that profit on a necklace is ₹100, a necklace a একটা নেকলেসের আমার প্রফিট 100, তাহলে প্রফিট ফ্রম X নেকলেস 100 into X 100X, एंड प्रॉफिट फ्रॉम ब्रेसलेट में कितना प्रॉफिट होता है 300 बोला, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना है Y है पर डे, तो Y इंटू 300 मीन्स 300 Y, तो आवर प्रॉफिट फ्रॉम नेकलेस इज ₹100X and our profit from bracelet is 300Y per day, okay। Now total maximum earnings from both items per day is 100X plus 300Y, यही हमारा टोटल क्या अर्निंग्स, ठीक है। ये भी एक आंसर होगा, क्योंकि जेड इक्वल टू मैक्सिमाइज जेड बोला, जेड मीन्स टोटल अर्निंग, मैक्सिमाइज बोला ना, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, देखो क्या क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 100X plus 300Y
यही एक आंसर होगा जेड। उसके बाद देखो बोला हमारा क्या, here is given that at most 24 items will be produced per day, and that's why the number of necklace and also number of bracelet per day, दोनों का सम ऑफ क्या होगा, at most 24, that means less than 24 or equal to 24, that means क्या, x plus y equal to 24, देखो यही होगा। क्लियर? एटमोस्ट बोला मैक्सिमम होगा, तो 24 का नीचे होगा और 24 के इक्वल होगा, यही तो मैक्सिमम है, इसीलिए x प्लस वाई लेस देन 24 लिखना है। ऑलवेज याद रखना, यहाँ पर बोल दे दिया क्या, एटमोस्ट। एटमोस्ट एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है, एटलीस्ट नहीं। एटलीस्ट मीन्स सबसे कम, तब क्या होता था, एटलीस्ट होने से x प्लस वाई लेस देन 24 होता था। क्या 24 का छोटा होगा, x प्लस वाई क्या होगा ना, 24 से बड़ा होगा। बड़ा मीन्स क्या होगा, 24 मिनिमम प्रोडक्शन होगा एंड मैक्सिमम 24 का ऊपर होगा। लेकिन ना यहाँ पर बोला एटमोस्ट 24, दैट मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्शन विल बी 24 पर डे, इसका ऊपर नहीं होगा। देन x प्लस वाई लेस देन 24 और इक्वल टू 24। द टोटल नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट इक्वल टू पर डे 24। क्लियर? ए भी एक आंसर है, ए भी एक इक्वेशन हो गया। जितना इक्वेशन होगा उतना इक्वेशन तुमको लिखना है। आप क्या होना चाहिए, टू मेक वन ब्रेसलेट इट टेक्स 1 आवर, ठीक है। क्या कर रहा है, 1 आवर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाफ एन आवर टू मेक ए नेकलेस, 1 आवर टू मेक ए ब्रेसलेट। ये तो आवर का टाइम बाद बोल दिया था ना, और क्या बोला था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे इज 16। अर्थात नेकलेस के लिए, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट योर टोटल टाइम इज 16, मैक्सिमम टाइम इज 16। देयर वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स it takes he takes क्या to produce Y bracelet, and how many times he takes X to produce X necklace। पहले to make one bracelet it takes 1 hour company, to make Y bracelet company takes 1 into Y hour, to make one necklace it takes half hour, to make X necklace it takes half into X hour, that means X by 2 hour। क्लियर? नाउ दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड करने से क्या बोला, ये बोला क्या ना, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोला, प्रोडक्शन क्या बोला, डेली पर डे कितना प्रोडक्शन, कितना टाइम प्रोडक्शन होगा, 16 पर डे 16। क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे इज 16, पर डे इज 16। देखा, पहले हमारा मैक्सिमम टाइमिंग प्रोडक्शन इज 16, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइम प्लस दिस टाइम ऑलवेज क्या बोला, मैक्सिमम बोला, एटमोस्ट 16 बोला, तो हमारे 16 का ऊपर नहीं होगा, तो हमने 16 का नीचे होगा और 16 का इक्वल होगा, बिकॉज द अवेलेबल और मैक्सिमम टाइम पर डे फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ आइटम्स इज 16 आवर्स। बस इसीलिए लिख लिया। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करो, दोनों तरफ ऐड किया हम x प्लस 2y/2, उसके बाद 2 हटाओ, 2 हटाने से बोथ साइड से 2 से इंटू करो, x प्लस 2y लेस देन 32, तो दिस विल बी द आंसर। पहले 3 इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला ना, हमारा बोला लास्ट लाइन में क्या बोला, इट बी गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, वन ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। वन ऑफ ईच मीन्स नेकलेस भी 1 होना चाहिए और ब्रेसलेट भी मिनिमम 1 होना चाहिए। तो हमने क्या बोलेगा, एक्स नंबर ऑफ नेकलेस की एक्स है, तो एक्स क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, और नहीं तो एक्स 1 का ज़्यादा होगा।
नंबर ऑफ नेकलेस 1 होगा व 1 का ज़्यादा हो सकता है, और नंबर ऑफ ब्रेसलेट भी 1 होगा व 1 का ज़्यादा होगा। ये भी आंसर है। तो इसीलिए हमारा जो टोटल जितना इक्वेशन हुआ ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो क्या लगेगा ना, हमारा प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज LPP एज मिनिमाइज, तुमको बोला मिनिमाइज जेड इक्वल टू क्या बोला 100x प्लस 300y। पहले इक्वेशन जो मिला तुमको देखो, यही हमारा मिनिमम प्रॉफिट है 100x प्लस 300y पर डे। तो मिनिमाइज जेड इक्वल टू यही है, इसको लिख दो। उसके बाद क्या बोला, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट लिखेगा, बस कोई बात नहीं। तब नेक्स्ट है x प्लस वाई, टोटल टाइम क्या होगा, मैक्सिमम 24 बट लेस देन 24, ये मैक्सिमम 24 अथवा इक्वल टू 24, क्लियर। एंड टोटल ना, ये तो टोटल प्रोडक्शन, सॉरी एटमोस्ट प्रोडक्शन 24 है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन 24 अथवा लेस देन 24 होगा। और दूसरा जो मैक्सिमम जो टाइम है, टाइम को कैलकुलेशन करके जो मिला हमको, इसको कैलकुलेट करके करके हमको ऐसे मिला। चलिए, टाइम से मिलता है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 32, एंड दिस एंड दिस विल द these are the formulation of this problem. You have to formulate, बस this is the chapter। पहले फॉर्मूला बनाना सीखना होगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाना है, ग्राफ करना है, मैक्सिमम मिनिमम सब मिलेगा, ठीक है। ये वाला इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, देख लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। 3 क्या बोला, देखो 3 क्या बोला, A furniture dealer deals in only 2 items, tables and chairs। फर्नीचर डीलर जो है तो वो क्या क्या तैयार करता है ना, टेबल्स एंड चेयर्स तैयार करता है। ही हैज़ ₹2000 टू इन्वेस्ट एंड स्पेस टू स्टोर एटमोस्ट 80 পিসেস, ঠিক আছে। হি হ্যাজ, তার কাছে কত টাকা আছে, 2000 রুপিস আছে, ঠিক আছে। ही हैज़ ₹2000 टू इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में, एंड स्पेस जाएगा क्या है ना, ओनली 80 पीसेस एटमोस्ट, सबसे मैक्सिमम जो आइटम वो उसका रखने का जगह है, वो कितना पीस रख सकेगा, 80 पीसेस। तो 80 पीसेस उसका रखने का जगह है। 80 पीसेस मीन्स इस 80 के अंदर थोड़ा चेयर भी हो सकता है, और थोड़ा चेयर एंड थोड़ा टेबल भी है, दोनों मिला के। A table costs him ₹800 and the chair cost him ₹200। अर्थात टेबल का जो कॉस्ट बनाया वो क्या है, 800 रुपीज़, और चेयर का कॉस्ट बनाया 200 रुपीज़, ठीक है। ताले टेबल बनाने के लिए उसका कितना रुपया खर्च हुआ, 800 रुपया खर्च हुआ एक टेबल के लिए। चेयर कॉस्ट हिम, एक चेयर के लिए कितना रुपया है, 200 रुपीज कॉस्ट हुआ, ठीक है। ही कैन सेल ए टेबल फॉर ₹950, टेबल बनाता है 800 में, सेल कर रहा है 950 में। एंड ए चेयर फॉर ₹280, चेयर बनाता है 200 रुपीज में और बेचता है 280 में। Assume that he can sell all the items that he buys, অর্থাৎ এটা ধরে নিতে হবে সে প্রত্যেকটা আইটেমই সেল করে দিয়েছে, যা যা সে কিনে নিয়ে এসছে বা তৈরি করেছে, जो चीज़ वो खरीद के ले आया और बनाया, पकड़ लो, वो पूरा सेल हो गया। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज एन LPP so that he can maximize his profit। তাহলে এই जो सिचुएशन बोला, ये सिचुएशन का फॉर्मुलेट करो। पहले वी हैव टू
prepare a formula as a formula, which formula shows the maximum profit, shows the maximum profit. जैसे फॉर्मूला क्या क्या होगा देखो, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, here is not given the how many tables and how many chairs he produces. How many chairs and how many chairs he produces, this is not given here, and that's why we have to assume that number of tables is x and number of chair is y. ठीक है. Next, from one table हमारा क्या मैं फॉर्मूला बनाने के बोला, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, याद रखना, दैट मीन्स प्रॉफिट. तो हमको प्रॉफिट में जाना है, तो क्या करेगा, द प्रॉफिट फ्रॉम वन टेबल एस पी माइनस सी पी, एस पी ऑफ वन टेबल and CP of one table. SP of one table here is given the 950 rupees and CP of one table equal to 800. That means profit from one table equal to rupees 150. And profit from one chair, SP of one chair minus SP of one CP of one chair, that means 280 minus 20 minus क्या 80, 80 होगा, सॉरी sorry 280 minus 200 means there is something wrong. 280 minus 200 means 80. This will be 80. Bad mistake. 80. Okay. Now profit amount from X table equal to X table. From one table our profit is 150, and that's why from X table our total profit will be rupees 150 into X, that means 150X. And profit from Y table will be 80 into Y, that means 80Y. Okay. From X table our profit is 150X, from Y table our profit is 80Y, and that's why the total maximum profit or maximum profit from business क्या ना, मैक्सिमाइज जेड पकड़ लो, जेड टोटल प्रॉफिट क्या है, जेड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 150X from chair and 80Y from table. That means 150X plus 80Y. 80Y. Sorry. Subject to the constraints. And this is the equation. Here, don't write rupees. Into the equation, there must be not a unit. Any unit. And that's why I want to Z equal to 150X plus 80Y. Clear? This is the first answer, first equation. Okay. Now, store items. Total items is, here is given 80. Total items given 80. And that's why number of chair is X and number of Y, a table is Y, and that's why X plus Y will equal to 80. But 80 was given here. 80 is given here क्या? At most 80 pieces. At most 80 pieces. So therefore, at most 80 pieces माने सबसे ज़्यादा 80 प्रोडक्शन होगा पर डे. 80 प्रोडक्शन होगा पर डे. So therefore, X plus Y equal to 80 and also X plus Y less than 80. 80 का ऊपर नहीं होगा, 80 का ज़्यादा नहीं होगा. It is not more than 80 but less than 80 and also equal to 80. Okay, this also be a equation, inequation, and this is also be an answer. Now we have to use यहाँ पर number of pieces हो गया,
अच्छा, प्रॉफिट से हो गया। अब क्या होगा उसका इन्वेस्टमेंट की बोला ना, ही हैज़ ₹2000 टू इन्वेस्ट। क्या बोला? सिर्फ उसका घर उसका पॉकेट में कितना रुपया है? 2000 है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ओनली 2000 रुपीज। तो उसको लेके भी एक इक्वेशन बनाना है। तो क्या बनाएगा देखो, कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज क्या? वन टेबल एंड वन चेयर आर ₹800 एंड ₹200 रिस्पेक्टिवली। ये तो बोल दिया क्वेश्चन में। एक टेबल का कॉस्ट 800 है, एक चेयर का कॉस्ट 200 है। तो हम कितना चेयर बनाया? एक चेयर बनाया। कितना टेबल बनाया था? वाई टेबल बनाया था। तो हमारा number of production of chair is x and number of production of table is y, and that's why the cost of x chairs will be 800 into x, and cost of table कितना टेबल? y टेबल का 200 into y, कारण एक टेबल का कॉस्ट 200 है, 200 y होगा। ये दोनों मिला के क्या होगा? 2000 होगा, इक्वल टू 2000। और क्या बोला? 2000 का ज़्यादा नहीं होगा, 2000 उसका पास है, 2000 ही खर्च करेगा, इसीलिए इक्वल टू 2000 एंड ऑल्सो लेस देन 2000। ये चेयर जो टेबल बनाया, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स ही टेक्स ₹2000 और लेस देन 2000। तो बिकॉज वी डोंट नो exactly what amount is used for X chairs and Y tables, but we know his budget is 2000, and that's why we may take the total cost of X chairs and Y tables equal to 2000 or less than 2000. बस 200 कॉमन ले लिया, 200 कॉमन 4x plus y, दैट मीन्स बोथ साइड से 200 से। इनिक्वेशन में ऐसे ही करते हैं, दोनों साइड से डिवाइड इंटू करना है, करके 200 को हटाओ तो मिल गया 4x plus y लेस देन और इक्वल टू 10। ये भी एक आंसर है, ठीक है, 4x plus y इक्वल टू 10 लेस देन और इक्वल टू 10, ये भी एक आंसर है। चलो हमारा इतना इक्वेशन मिल गया, चलो जितना इक्वेशन मिला वो एक साथ लिखना है। हेंस द प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज LPP एज मैक्सिमाइज जेट। Maximize Z means profit, according to profit. Maximize Z profit equal to 150x plus 80y। x y मालूम हो जाएगा तो पुट करो तो हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू द एंड कॉन्स्टेंट्स, एंड 4x plus y लेस देन और इक्वल टू 10। ये सेकेंड वाला इक्वेशन मिला। कहाँ से मिला था? 4x plus y लेस देन 10, वो जो कॉस्ट से। और ये वाला क्या है? आइटम से, x plus y इक्वल टू लेस देन और 80, नंबर ऑफ चेयर नंबर ऑफ टेबल से। और एक्स बोला क्या? एक्स जो नंबर ऑफ चेयर्स, नेवर भी जीरो होगा तो बिजनेस कैसे होगा? कोई चेयर बनाया नहीं, कोई टेबल बनाएगा ना, तो बिजनेस कैसे होगा? तो हमने पूरा टेबल भी हो सकता है, पूरा चेयर भी हो सकता है, इसलिए एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। किंतु कभी माइनस नहीं होगा। प्रोडक्शन क्या होता है? सपोज टेबल नहीं बनाया लेकिन पूरा चेयर बनाया, ठीक है, सपोज टेबल चेयर नहीं बनाया, टेबल बनाया, लेकिन माइनस में नहीं होगा। इसीलिए नंबर ऑफ चेयर्स का क्या होता है? एक नंबर होता है, नंबर नेवर भी क्या 0 का छोटा नहीं होता है, 0 से बड़ा ही होता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, बस। तो हम 0 पुट कर, सपोज हमारा प्रोडक्शन कुछ नहीं है, पकड़ लो कोई प्रोडक्शन नहीं है, चेयर भी नहीं है, टेबल भी नहीं है, तो मैंने x 0 है, y 0 है, तो हमारा प्रॉफिट की मैंने यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो बोला, x का जगह में 0, y के वहीं 0 पुट करेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कोई प्रोडक्शन नहीं है तो प्रॉफिट क्या होगा? 0 ही होगा, समझे ना? तो 0 भी हो सकते हैं, 0 होने से ये तो कोई रिजल्ट नहीं होता है, ये तो इनवैलिड नहीं होता है, ये तो प्रूफ कर रहा है जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रॉफिट 0 होगा, इसलिए 0 भी लेना है। इसलिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? थैंक यू। हमारा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 जो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, वो डिस्कस करेगा, खूब तुरंत आ जाएगा वीडियो में, ठीक है।
Thank you.